Hello students, today we will start Chord of Contact. So beta we find equation of chord of contact. First we discuss chord of contact क्या होता है बेटा. This one is a polar axis. Draw any conic from any point, let P point. Draw two tangents. ठीक है. This point is called point of contact. Q and R. Joining these point, this chord is called chord of contact. So बेटा आज हम ये chord of contact की equation find करेंगे. So first find the equation of chord of contact of tangents drawn from P. P point क्या दिया हमें बेटा R1 theta 1 to the conic L upon R equal to 1 minus E cos theta. Let इसका विक्टोरियल एंगल जब पोलर एंगल क्या कंसीडर कर लिया अल्फा, इसका क्या कंसीडर कर लिया बेटा बीटा. सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ chord joining two points P alpha and Q beta. So beta find equation of chord joining two points P alpha and beta is L upon R minus E cos theta plus secant beta minus alpha upon 2 cos theta minus alpha plus beta by 2. बेटा मैंने ये प्रूव किया है कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इस उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा बेटा इसमें. ठीक है. सो एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा प्लस सीकेंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा. सो वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट क्यू एंड आर की सी बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एल अपॉन आर माइनस ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस अल्फा एंड एल अपॉन आर माइनस ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस बीटा. ओके, ये भी मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने प्रूव किया है, उसका लिंक मैं बेटा शेयर कर दूंगा आपको वीडियो का. सो दिस वन पासिंग थ्रू दिस टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहे हैं बेटा, पासिंग थ्रू पी R1 थीटा 1. So equation is L upon R1 minus E cos theta 1 plus cos theta 1 minus alpha and L upon R1 equal to minus E cos theta 1 plus cos theta 1 minus beta. Okay, so this equation is 4 and 5. सो सॉल्व भी देखो बेटा हमने क्या कंसीडर किया है इसमें, टू विक्टोरियल एंगल या टू पोलर एंगल अल्फा एंड बीटा. सो फर्स्ट वी एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा. सो सॉल्व 4 and 5. L upon R1 plus E cos theta 1. Okay, this one equal to cos theta 1 minus alpha. L upon R1 plus E cos theta 1 equal to cos theta 2 minus beta. So cos theta 1 minus alpha cos theta 2 minus theta 1 minus beta. Okay, so theta 1 minus alpha plus minus theta 1 minus beta, because देखो cos alpha equal to cos beta, we write cos minus beta, so alpha equal to plus minus beta. So take positive sign and take negative sign. So alpha not equal to beta because both are different angle. So we have 2 theta 1 equal to this one is exact because alpha and beta are two different angle. So alpha plus beta. So theta 1 equal to alpha plus beta by 2. Put in first and 4. So put in first and 4 क्या वैल्यू बेटा थीटा 1 इक्वल टू
क्या वैल्यू है ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2. सो फ्रॉम फर्स्ट पुट इन फर्स्ट एंड फोर्थ. बेटा इन फर्स्ट L upon R plus E cos theta is equal to cos theta minus theta 1 upon cos beta minus alpha by 2. Okay, so we have put in first L upon R plus E cos theta, this one equal to into cos beta minus alpha by 2 equal to cos theta minus theta 1. Okay, put in first and put in 4. Beta put in 4. So we have L upon R1 plus E cos theta 1 is equal to cos, this equation write 6, cos theta 1 is equal to क्या थी वैल्यू बेटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा. सो L upon R1 plus E cos theta 1 equal to cos beta minus alpha by 2. Put in 6. So we have find equation of chord of contact. So एक किसकी इक्वेशन आई बेटा हमारे पास chord of contact की. E cos theta 1 equal to cos beta minus alpha by 2. Sorry, equal to cos theta minus theta 1. So equation किसकी है बेटा equation of chord of contact L upon R plus E cos theta into L upon R1 plus E cos theta 1 equal to cos theta minus theta 1. Okay, one example of chord of contact beta. Prove that example beta. Prove that chord of contact of two perpendicular tangents ठीक है to the parabola passes through the focus. Beta equation of parabola, you know equation of parabola beta L upon R equal to 1 minus cos theta because E is equal to 1 in parabola. Okay, so बेटा इसमें हमने क्या प्रूव करना है बेटा two perpendicular tangents. Beta this one is 90 degree. Okay, you know two perpendicular tangents always passing through the जो perpendicular tangent है two perpendicular tangent in parabola always meet on directrix. Directrix की इक्वेशन क्या थी बेटा L upon R equal to minus E. E is equal to 1, so L upon R equal to minus cos theta. ओके बेटा. सो हमने पे क्या प्रूव करना है जो कोड ऑफ कंटैक्ट है ये वाला, ये पासिंग थ्रू फोकस, ये फोकस में से पास कर रहा है. फोकस मींस पोल में से पास कर रहा है. यू नो इज दिस कॉनिक फोकस एज ए पोल वी कंसीडर. सो बेटा दिस पॉइंट इज P R1 theta 1. So this point P lies on directrix L upon R1 equal to minus cos theta 1 consider as 1. Okay, equation of chord of contact क्या थी बेटा equation of chord of contact is L upon R plus E cos theta E is equal to 1 L upon R plus cos theta 1 equal to cos theta minus theta 1. So L plus R cos theta, okay, L upon R1 plus cos theta 1 equal to R cos theta minus theta 1. You know हमने क्या प्रूव करना है, this chord of contact passing through focus if
passes through focus. Focus means pole. Pole means r equal to 0. If r is equal to 0, we have L upon r1 plus cos theta 1 equal to 0. L upon r1 plus cos theta 1 equal to 0. From 1, 0 equal to 0, which is true. So जो कोड ऑफ कंटैक्ट है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा? पोल से या फोकस से क्या कर रहा है? उसमें पास कर रहा है. So बेटा, thank you very much. In next video we discuss equation of polar and pair of tangents. So thank you very much बेटा.